जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम we are going to simplify the given expression by taking the LCM. As you have already studied about the LCM in your previous classes, that 6, 7, 8, that LCM means least common multiple. So that we have to first we have to find the least common multiple that can divide all these denominators, and then how to simplify these expressions. So we are going to learn in today's lecture. So to simplify this kind of expressions, we will use some kind of formulas that we have already studied in our previous videos. So if you see, these two expressions are very simple, but the third one is showing you a kind of formula, that x square minus y square. If you remember that a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. So we will simplify this expression, that x minus y minus y over x plus y minus 2xy divided by x square minus y square को हम लिख लेंगे इस फार्मूले की शक्ल, means first plus second into first minus second. So if you see, x minus y, x plus y, and x minus y. So in the given situation we will take the LCM, and LCM will be there, x plus y into x minus y. So that's the way that we are going to simplify this question. So now what we have to do, we will take the first term, and these two expressions will be divided with this one, and the remainder will multiply by this x. So in other words, that we can say that the LCM will be divided by this denominator, and the remainder will multiply with this numerator. So let's see if you divide them two expressions. So in our this divided by this, that's the rule when we take the LCM. So how can we use the method to solve the situation, that x plus y into x minus y divided by this numerator x minus y. So this will cancel with this one, x minus y और x minus y cancel हो जाएंगे, जो बच जाएगा x plus y वो multiply होगा numerator के साथ. So x into x minus y और x minus y cancel हो गए, बाकी आपके पास x plus y रह गया. So in our next step the same process will be done. So x plus y or x plus y will be cancelled with each other, and then y will multiply by this x minus y. So we will write this term as y into x minus y. Then the minus sign. Now them two are same when we will divide these two expressions, so they will be cancelled with each other. So बाकी आपके पास दोनों कैंसिल होने के बाद वो एक बच जाएगा, उसे को आप मल्टीप्लाई करेंगे
2 into xy के साथ। तो ये सिचुएशन बनेगी इन द सिंप्लीफिकेशन करते हुए। So now the simplification will also have to do that we will multiply x, remove these brackets by multiplying by x, y and 2x, y. So x इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x y से मल्टीप्लाई होगा x y आ गया, and then minus will multiply with this expression minus y, so minus y x and minus minus plus y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर हो जाएगा, and then 2xy when we'll multiply with 1, so it will remains same, and divided by x plus y into x minus y. So next step, just check all these terms that are there with each other, subtracting or adding with each other. So x square, यहाँ पे कोई और x square है नहीं जी, यहाँ पे x square वैसे ही आ जाएगा, plus xy and minus yx or xy minus xy, ये दोनों same हैं with different signs. When we do minus subtraction with each other, so they will be cancelled. So the remaining y square check करें, कोई y square यहाँ पे है, वो इसी तरह आ जाएगा minus 2xy divided by x plus y into x minus y. So if you remember, that expanded form is showing a kind of formula that, if you remember, a plus minus b whole square will always equals to square of first plus square of second minus 2 plus minus 2 into first into second. So if you see, this expanded form seems to be like that with the variables x and y. So इस expanded form को हम इस form में लिख लेंगे. So this expression can be written as x minus y whole square divided by x plus y into x minus y. So a little bit more simplification. x minus y, यहाँ पे ये raised to power 2 है, यहाँ पे इसकी raised to power 1 है, बिल्कुल same expressions है दोनों. So दोनों, when two same expressions are dividing with each other, then their powers will be subtracted with each other. So that can be written like as x minus y raised to power 2 minus 1 divided by x plus y. So x minus y, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 रह गया पावर, वो हम लिखते हैं या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So x minus y divided by x plus y. So that's the answer that we have done the solution of this expression by taking the LCM. So उम्मीद है कि आपको
ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें इन क्वेश्चंस को करने का मकसद ये है that you will understand or you will learn the formulas. So how can you use the formulas in the given circumstances? So इन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो फार्मूलेज हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं वो आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से फार्मूलाज को लगा के, और ये देखना है कि कौन सा फार्मूला किधर लगाना है और उस फार्मूले को किस तरीके से लगा के आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सल्यूशन ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मूलाज यूज़ किए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो उसमें फिर हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई करके हमने उसका ये आंसर निकाल लिया। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको देखें और समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।